अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपका पसंदीदा पैनल आपके सामने हाजिर है। माई सेल्फ तैमूर अहमद। हमारे साथ हैं शरियार वसीम, मिस्टर उमर खान एंड मिस्टर शाइन वसीम। तो लास्ट टाइम हमने आप लोगों से बात की थी, जो कुछ मैचेस होने वाले थे उसमें पाकिस्तान नेदरलैंड्स का मैच भी था जिसमें हमने काफ़ी डिस्कशन की थी। लेकिन जो एक मेन चीज़ जिससे हमने स्टार्ट की थी अपनी डिस्कशन, वो बेसिकली जो पहला मैच था वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड का। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ दैट पर्टिकुलर गेम हैज सेट द टोन ऑफ द इंटायर टूर्नामेंट। जैसा कि हमने देखा कि इंग्लैंड ने एक मोर लेस डिसेंट स्कोर किया पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन द वे न्यूजीलैंड चेस्ड इट एंड जिस तरह से उन्होंने अपने रन रेट को काफ़ी सपोर्ट मिली उनके रन रेट को उस गेम से। एंड देन वी सॉ साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका का गेम, जिसमें साउथ अफ्रीका ने बेसिकली दे जस्ट exceeded all the expectations. और रन रेट का जो हम बात कर रहे थे वो अगेन became a very hard discussion. Then we saw a game in धर्मशाला for अफगानिस्तान का गेम हमने देखा था बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसमें sort of promising start मिला अफगानिस्तान को, लेकिन then बीच में उनकी जैसे एक इनका एक sort of pattern रहा है विकेट्स गिरी and then they couldn't recover. And then उसके बाद हमने कल का गेम जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था, which was actually a pretty exciting game. काफ़ी राइट एंड लेफ्ट जा रहा था ऑल द टाइम गेम। तो जो टोन सेट हुई थी, हमें लगता है कि वो सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट ग्राउंड्स में हमें डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस अब मिल सकती हैं। तो उसी से मैं बात शुरू करना चाहूँगा शरिया के जो गेम्स हमने देखी हैं, और हमने देखा कि डिफरेंट ग्राउंड्स में आपको डिफरेंट कंडीशंस रिजल्ट्स देखने को मिले। तो उसमें आपके क्या तासुरात हैं? एंड सेकेंडली मुझे बताइएगा कि क्या टॉस का फैक्टर अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें शुरू में लग रहा था, या नहीं लग रहा था? अस्सलाम वालेकुम। टॉस का फैक्टर तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतना मैटर करता है, क्योंकि अगर आप गेम्स को देखें तो आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड का गेम उठा के देखें तो उसमें इंग्लैंड को ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादा बॉलिंग ने तंग किया हो। देवर playing ultra aggressively in they were losing wickets in regular intervals. अगर on the contrary अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया इंडिया का गेम, तो उसमें बॉलिंग ने तंग किया है बैटर्स को, मगर सेम टाइम वो सेकंड इनिंग्स में भी था। चेज इतना आसान नहीं था। अगर कोहली का कैच कैच वो हो जाता उस टाइम पे, तो थिंग्स वुड हैव मच डिफरेंट। तो यू नो साइकोलॉजिकली यू कैन से कि टॉस मैटर है। आप जो है वो यू नो पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट टीम्स को वैसे भी श्योर नहीं है कि भाई के इन पिचेस पे आपने डिफेंड करना है, चेस करना है कि टारगेट देना है, किस तरह से यू हैव टू गो अबाउट विनिंग। मगर ये कि क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ जो इयन चैपल ने लिखा है कि इस वर्ल्ड कप में बेसिकली जो भी बेसिक्स करेगा ना क्रिकेट की, they will have a better chance of performing well and lifting the trophy. What I understood was कि भाई अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो you have to make sure कि you are 50 overs, and you have to आप वो जो phases में जो गेम चल रही है उसको आपने मेंटेन रखना है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अल्ट्रा अग्रेसिवली खेलें, प्रोसेस आप विकेट लूज करें या बिल्कुल ही में चले जाएं, and then score the par, or more par score. Similarly, अगर आप बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो you have to keep taking wickets. Otherwise, these pitches, no matter how good they look on the surface, these runs are going to be chase. ठीक है, उनका साउथ अफ्रीका गेम देखें उन्होंने 428 रन मारे, बट श्रीलंका दे वेंट अबाउट चेजिंग इट। ठीक है कि अगर वो थोड़ा सा अगर उनके साथ लक होती, अगर एक दो विकेट उस तरह से नहीं गिरती, तो देन थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि कि दोनों टीम्स अभी तक जो है वो बस थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आए कि हम या तो कुछ टीम्स फिनिश नहीं कर रही हैं अपनी इनिंग्स, या दे आर लेटिंग द ऑपोजिशन कम बैक इनटू, वो थोड़ा सा ज़्यादा रिजल्ट्स कर रहा है एज कम्पेयर टू द टॉस या द कंडीशन दैट जो जिन ग्राउंड्स पे हैं।
राइट। और शरियर आपने जैसे बात की कि श्रीलंका ऑल्दो साउथ अफ्रीका ने इतने सारे रन्स किए, लेकिन श्रीलंका काफ़ी आ गया था। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि श्रीलंका इतने ज़्यादा रन्स करके भी इतने ज़्यादा रन से हार गया। बिकॉज़ ऑल्दो दे वर एबल टू क्रॉस 300 बट स्टिल द टारगेट वाज़ ह्यूज। एंड इनफैक्ट मैं कंपैरिज़न देख रहा था कि 40 ओवर के मार्क पे साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका हैड द सेम स्कोर व्हिच वाज़ 291। द ओनली डिफरेंस वाज़ दैट श्रीलंका हैड लॉस्ट टू मेनी विकेट्स बाय देन, सो एसेंशियली दे हैड नो चांस टू कम बैक इन द गेम। नहीं, अगर आप उन स्टार्ट भी देखें ना, अगर अगर से मैं जस्ट टू ऐड अ क्विक, उनके स्टार आप देखें तो एक बंदा 50 मार, और बाकी जो उसके उसके साथ जो है ना, वो जीरो पे खड़ा हुआ था। Mhm. तो and then say, I mean, obviously 428 का टारगेट was never going to be chased, ठीक है। मगर जिस अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, अगर एक दो बैटर्स और क्लिक कर जाते हैं, तो देन यू नेवर नो, वो चाहे एग्जैक्टली। चेज भी करे जाते हैं। एब्सोल्युटली। उमर भाई आपकी तरफ मैं आता हूँ। और हम हमेशा से बचपन से जब से क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते आ रहे हैं, तो हम हमेशा एक बात सुनते हैं कि कैचेस विन मैचेस। और उसका अमली मुजाहरा हमने बहुत दफ़ा देखा, लेकिन जो एक सबसे रीसेंट मिसाल हमारे सामने है वो गेम, कल का जो गेम था ऑस्ट्रेलिया इंडिया का। अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस शुरू में हेज़लवुड ने और मिचेल स्टार्क ने जो प्रेशर दिया, और हेज़लवुड ने जिस तरह से बॉल करके, जैसे शहरियार बात कर रहे थे कि विकेट टू विकेट गुड लाइन एंड लेंथ पे आपने बेसिक्स पे स्टिक करके इंडिया को पकड़ लिया था। उस कैच में किसकी गलती थी, कौन मिसकम्युनिकेट कर रहा था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हमने देखा कि एक मिस्टेक आप इतने बड़े प्लेयर को देते हैं एंड देन दे जस्ट टेक द गेम अवे। सेकेंडली मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग कर रहा था तो इंडिया के स्पिनर्स ने बहुत टफ टाइम दिया। लेकिन एडम जैम्पा, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मतलब जो लोग ऑस्ट्रेलिया, आई एम नॉट श्योर स्टीव स्मिथ ने बॉल की या नहीं की, बट एटलीस्ट एडम जैम्पा एंड ग्लेन मैक्सवेल ने रात के टाइम पे जब वो बॉल कर रहे थे तो वो इतने इफेक्टिव नहीं नजर आए कि वो जितना इंडिया के स्पिनर्स थे। तो उमर भाई आपको क्या लगता है कि इज इट अ मैटर ऑफ स्किल्स बिटवीन द टू साइड्स व्हेन इट कम्स टू स्पिन बॉलिंग, या फिर कंडीशंस ड्रास्टिकली डिफरेंट हो रही हैं बिटवीन डे एंड नाइट व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, पर्टिकुलरली स्पिन बॉलिंग? कंडीशंस तो डिफरेंट है। आपकी जब दिन में आप जब तो आपकी ड्यू नहीं है, आपकी हवा जो है वो ज़रा खुनक नहीं है, टेम्परेचर जो है हवा का वो ज़्यादा है, आपकी पिच जो है वो ड्राई है, और जो भी मॉइस्चर था सुबह से लेकर दोपहर तक जब गेम शुरू होती है दैट्स गॉन। बाय द टाइम 9, साढ़े 9, 10 बजते हैं वो मॉइस्चर चला गया आपका। गेम शुरू होती है आपके कोई 2:30-3 बजे। तो उस पे फिर अगर बॉल ने ग्रिप करना होता है, बॉल ग्रिप करती है। बॉल अगर आउटफील्ड में जाती है तो उस पे जो ओस है वो नहीं पड़ती है, तो वो स्पिन भी होगी। और ऊपर से आपके जो स्पिनर्स की क्वालिटी है, कुलदीप हो गया और बाकी जो स्पिनर्स हो गए, जडेजा हो गया, उनकी जो क्वालिटी है वो ज़ैम्पा और मैक्सवेल से बहुत ज़्यादा है, अच्छी है, बहुत बेहतर है वो लोग। ज़ैम्पा तो खैर अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है। इस्टेब्लिश होने का मतलब कि लीग्स खेलता था, अब जाके ज़ैम्पा पिछले कोई 2 ढाई साल से रेगुलर फीचर बनना शुरू हुआ है एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन, जिसको ये लोग एम्प्लॉय करना शुरू किया। जहाँ तक मैक्सवेल की बात है, मैक्सवेल का कल भी बात कर रहे थे कमेंटेटर्स के, 4-5 ओवर कराएगा, उससे ज़्यादा नहीं कराएगा, मगर उसने कराया ओवर क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं याद कि अगर लबुशेन ने कोई ओवर कराए या नहीं कराए, मगर उसकी जो लेग स्पिन है वो मैक्सवेल से ज़्यादा स्पिन हो सकती है बॉल, मगर फिर बात वही आती है आपकी जो ड्यू फैक्टर है। ड्यू फैक्टर ज़रूर आपका आएगा और आता रहेगा जितनी आपकी नाइट गेम्स होंगी। जहाँ तक बात हो गई कैचेस की, एब्सोल्युटली कैच मिस हो गया, और विराट कोहली का जब कैच मिस होता है तो फिर आप ये दुआ करें कि अगर अगली बॉल पे कैच आ जाए या आउट हो जाए तो हो जाए, वरना फिर कोहली साहब तो कहाँ आउट होंगे। सो बहरहाल आई थिंक कि ड्यू का फैक्टर रहेगा, बेशक वो रिवर्स स्विंग हो, बेशक आपकी वो स्पिन हो, फिंगर स्पिन हो, रिस्ट स्पिन हो, ज़्यादा रिस्ट स्पिन, उसमें आपका ड्यू फैक्टर आएगा। तो लेट्स सी कि अगली गेम्स में क्या होता है। जहाँ तक बात है स्पिनर्स की क्वालिटी की, आई थिंक इंडिया के अलावा प्रॉबेबली अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये दो और टीमें हैं जिनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं जो बाकी सारी टीमों को टफ टाइम देंगे। होपफुली शदाब्स गोना कम टू पार्टी, ही इज नॉट अ रियल स्पिनर, मगर होपफुली ही इज गोना कम टू पार्टी।
राइट एंड उमर भाई बिफोर आई मूव ऑन टू शान मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे शरियार यू कैन ऑल्सो इनफैक्ट ऑल थ्री ऑफ यू कैन चाइम इन ऑन दिस क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सॉर्ट ऑफ मिस्ड अ ट्रिक व्हेन दे वर एंड आई एस्क्ड दैट का ओडीआई रिकॉर्ड देखें खासकर इन कंडीशंस में तो ही इज़ नॉट सुपर सक्सेसफुल वी अंडरस्टैंड कि नेथन लायन वाज अनफिट बट स्क्वाड अनाउंस होने से पहले नेथन लायन apparently was fit and he sort of gave his availability to the Australian Cricket Board कि I'm available and I'm willing to go if you guys need me but they opted with Zampa और उसके अलावा भी इनकी ऐश ने Ashton for Yep, he लेकिन was. हमें he was Yep, and then he was replaced by another batter तो yep. नहीं, did वो Australia miss a इंजर्ड trick एशन एयर इंजर्ड हो गया था, सॉरी। हाँ, एशन Ashton एगर इंजर्ड हुआ हट इंजर्ड था हो गया. गया। यस बट Yep. उसके रिप्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अनदर बॉलर वो शायद किसी बैटर को ले आए थे तो व्हाट इंग्लिश डू को यू ले आए गाइस वो थिंक लोग। so did Australia miss a trick by not selecting another spinner and going with the batter खैर, अब जब आपने अगर वो सीरीज़ देखी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की, पहले ओडीआई में कैमरन ग्रीन इंजर हुआ, सब्स्टिट्यूशन कंकशन सब मार्नस लमिशेल 80 नॉट आउट किया, मैच जितवा दिया. अगली गेम में आई बिलीव ही स्कोर्ड 100. ही वाज आई थिंक प्रीटी क्लोज टू मिचेल मार्श इन टर्म्स ऑफ द रन स्कोर्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन साइड. और ये था फॉरेन स्क्वाड अनाउंस होने के बाद जिसमें मार्नस लबुशेन नहीं था. और उसके बाद फिर जो इंडिया के साथ सीरीज थी, आई थिंक इन दोनों सीरीज के दरमियान कहीं एशन एगार जो है वो इंजर हुआ. और बिकॉज मार्नस स्कोर्ड ऑल दीज रन्स, आई थिंक इट वाज जस्ट प्रेशर कि ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स वेंट विद हिम इंस्टेड ऑफ गोइंग विद ए स्पिनर. जहाँ तक बात है ट्रिक की, अगर आपको याद हो 2003 के वर्ल्ड कप से पहले शेन वॉर्न पे सब्सटेंस की वजह से बैन लग गया था. एंड एवरीवन वाज लाइक भाई व्हाट्स गोना हैपन, इज ऑस्ट्रेलिया गोना बी एबल टू विन द वर्ल्ड कप. खैर आई मीन एवरीवन नोज व्हाट हैपेंड देयर. मेरा नहीं ख्याल कि इतना फर्क पड़ भी. अगर इसी सरफेस पे 30 एक रन और होते तो probably it could have been a different game. क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जिस तरह बॉलिंग करते हैं, कल भी जिस तरह उन्होंने बॉल किया, आज मैं एक पढ़ा था तो उसमें राहुल ने बोला था कि when I walked in, they actually when we were 3 down, तो कोहली said to me, let's play test match cricket. और आपने अगर पूरा मैच देखा तो पता लग रहा था आपको कि उनकी फिलॉसफी क्या है. दे वर गोइंग आई मीन लेस देन आई मीन रन, आई डोंट नो 2-3 रन बना रहे थे हर ओवर में. सो मिसिंग द ट्रिक प्रॉब्ली उनके पास क्वालिटी स्पिनर है नहीं नेथन लॉयन के अलावा इस वक्त. सो विल सी हाउ दैट गोज. होपफुली इट कम्स बैक टू हॉन्ट देम. एज अ पाकिस्तानी आई रियली होप इट डज. शायद सेम क्वेश्चन फॉर यू और मैं एक्चुअली उस पे एक चीज़ ऐड कि श्रीलंका से गेम है आज चंद घंटों में और हम सबको पता है कि श्रीलंका के पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं. इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स है कि ठीकशाना भी शायद वापस आ जाए इस गेम में. आई थिंक ही डिड नॉट प्ले द लास्ट गेम लेकिन एक कॉन्फिडेंस फैक्टर भी है बिकॉज ये वही बॉलिंग यूनिट है जिसने अभी 425 रन खाए हैं पिछले मैच में. तो क्या लगता है आपको कि श्रीलंका के बॉलर्स विल दे be carrying that baggage in their mind या फिर do you think they're going to come in fresh and stick to their strengths and bowl like champs basically. हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक और चीज़, श्रीलंका अपने लास्ट 7 वर्ल्ड कप गेम्स पाकिस्तान से हारी हुई है। आई फ़ील लाइक एक और प्रेशर ये भी होगा उन पे। अम, आपका जो पहला सवाल था ऑन ऑस्ट्रेलियाज़ पॉइंट, अम, ऑस्ट्रेलिया की टीम सिलेक्शन में ना, अगर आप क्रिकेइन्फो की कमेंट्री फ़ॉलो करें व्हेन दे आर प्लेइंग, उनके बहुत से कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि उनकी भी जो सिलेक्शन पॉलिसी है, इट्स वेरी मच लाइक पाकिस्तान्स, क्योंकि किसी को, बहुत से लोगों को कुछ नहीं पता होगा कि भाई मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश और तनवीर संगा जो इनके 3 प्लेयर हैं, ये कहाँ से आए? आई वाज़ सरप्राइज्ड अबाउट मिचेल मार्श, क्योंकि मिचेल मार्श ने एशेज़ में परफॉर्म किया है। तो आई वाज़ सरप्राइज्ड कि यार उसकी सिलेक्शन पे इतना क्वेश्चन क्यों हो रहा है? बट अकॉर्डिंग टू लोकल ऑस्ट्रेलियंस जो मैंने पढ़ा है कि उन लोगों को मिचेल मार्श फर्जी लगता है या
they think him he's overrated or whatever. अब फिर सवाल ये होता है कि इफ नॉट मिचेल मार्श देन हु? आपके पास कौन ऐसा एस्टैब्लिश ऑलराउंडर है अपार्ट फ्रॉम मिचेल मार्श? क्योंकि कैमरन ग्रीन अभी तक हिट एंड मिस चल रहा है, ही इज नॉट कंसिस्टेंट। तो फिर एक सवाल ये आता है कि इफ नॉट मिचेल मार्श देन हु? सेकंड सेकंड स्पिन की बात होती है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज ट्राइंग टू प्ले अ लॉन्गर बैटिंग लाइनअप। I think I think most of the teams are going for hoping for an opportunity to chase. Okay, chasing so far what we have seen seems to be an easier method to go for. Most games that we have seen have been won chasing. Bangladesh, Afghanistan Cup, New Zealand versus England, India, Australia. Pakistan Netherlands थोड़ा मतलब आप साइड में करते हैं कि नीदरलैंड स्लाइटली वीकर साइड, बट नीदरलैंड जिस तरह खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, इट लुक लाइक इट वाज नॉट अ इजी पिच टू बॉल एट। तो बैटिंग के लिए थोड़ा आसान हो ही गया था। तो आई थिंक ये इस वर्ल्ड कप में हम लोग जो देख रहे हैं उसमें ये मोस्ट टीम्स आर ट्राइंग टू प्ले अ लॉन्गर बैटिंग लाइनअप। तो उसमें आप एक बॉलर सैक्रिफाइस करके आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएंगे, तो उसमें आई थिंक मैक्सवेल का रोल थोड़ा बढ़ गया है। अब I don't know कि if he's worth the risk. Maxwell, he's a conventional off spinner, कोई surprises देता नहीं है। He is a wicket taker, वो wicket ले लेगा, but at the risk of leaking 5 and over, 6 and over, that's a questionable call. जहाँ तक बात है पाकिस्तान श्रीलंका की, I think पाकिस्तान के खिलाफ anybody with any kind of baggage can go in with some confidence कि यार खैर है, पाकिस्तान के खिलाफ आप ये बैंक कर सकते हैं कि पाकिस्तान can play like the top team and Pakistan can also play like an associate team. So it's also a very iffy 50-50 thing, but recent form against Pakistan, Sri Lanka has, I would say कि they would go in with a lot of confidence, especially their main spinner coming back into the attack if he does in fact play. और considering कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर अभी भी थोड़ा shaky सा है, so I wouldn't be surprised that they basically set the South Africa game aside. और क्योंकि South Africa game में they थोड़ी outstanding batting तो थी. I think there are a lot of instances कि आप I think कोई भी bowler होता, I don't think कि score कोई इतना different होना था with regards to how they were batting. अगर ये बैटिंग क्वालिटी पाकिस्तान के खिलाफ हो या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, तो हाई 300 तो आई थिंक स्कोर जाना था, 350 360 जाना ही था। और क्या कहते हैं, with regards to Pakistan, I think Sri Lanka has a good chance of brushing that aside and going guns blazing. Sure. And Shariar, आपसे basically carrying forward the point that Shayan was making कि ज़ाहिर एक बैगेज आपके दिमाग में होता है, but you try to shrug it off and go fresh into the next game. लेकिन यही चीज़ आपको लगता है कि पाकिस्तान के बैटर्स भी सोच रहे होंगे कि यार ये वो बॉलिंग अटैक है जिसने ठीक ठाक रन भी खाए हैं, तो हम इनको कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी प्रेशर में ले सकें या डाल सकें वो हम डालें। और मैं आज कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था और कुछ कमेंट्री भी सुन रहा था डिफरेंट एक्स प्लेयर्स की। उसमें एक ये बात भी हुई थी कि बिकॉज श्रीलंका एम्प्लॉयज सो मेनी ऑफ स्पिनर्स, having two left-handed batters up at the top may not be ideal choice. और कुछ रूमर्स भी, आई एम श्योर, आई डोंट नो रूमर्स में कितनी सच्चाई है, लेकिन जितने में उतनी बातें वाली बात है, लेकिन देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन दैट अब्दुल्ला शफीक माइट गेट अ चांस टू प्ले टुडे इन प्लेस ऑफ फखर। तो प्रेशर के क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपसे पूछूंगा कि डू यू थिंक दैट डिसीजन वुड मेक सेंस एट दिस पॉइंट टू ब्रिंग इन अब्दुल्ला इन प्लेस ऑफ फखर, or should this be a chance for Fakhar to basically maybe try to gain his confidence or something? तो क्या लगता है आपको कि क्या हम expect कर when it comes to both the pressure handling as well as bringing Abdullah Shafiq in place of Fakhar? मैंने तो खैर एक न्यूज़ ये नहीं है कि सलमान अलिया कैन ऑल्सो ओपन, तो आई डोंट नो कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली बात हो रही है, क्योंकि
बच्चे फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो then somehow to him open the inning, but remain to be seen. But अब्दुल्ला शफीकी का 50-50 है. आई डोंट थिंक कि फ़खर को वो लोग सिर्फ एक उस पे एक क्या कहेंगे उसे, बैड इनिंग, वो शायद obviously he's been struggling at some time now, मगर क्योंकि he's our main batter, तो I don't think एक मैच के बाद they will have him sit out, especially because के जब आपको पता है कि श्रीलंका जो है वो स्पिनर से अटैक करेगी. तो वी नीड से लाइक फ़खर देयर वही वाली बात है यार के it's a risk but pay off अगर खड़ा हो जाता है वहाँ पे, then their spinners will get ineffective अगर फ़खर के शॉट्स लगना शुरू हो जाते हैं. But on the other side, we have some like Abdullah Shafiq who's very good against, और उसने जो एशिया कप में श्रीलंका के अगेंस्ट जो आई थिंक जो गेम खेला था, he scored 50 there. I mean, it's a 50 call, but let's see who plays. मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, बात हो रही थी स्टैट्स की कि पाकिस्तान को अपने सारे वर्ल्ड कप के गेम श्रीलंका जीता हुआ है. उस एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो श्रीलंका के करंट कैप्टन है शाना का, उन्होंने जब से कैप्टनसी संभाली, ही इज़ बीन पाकिस्तान इन एवरी फॉर्मेट. तो 20 ODI, he 6-0 right now since 2019. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब से वो कैप्टन बना है, उसने उसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान एक भी गेम नहीं जीता अगेंस्ट श्रीलंका का. तो लेट या आई मीन स्टैट्स कुड बी अ फनी थिंग, राइट? मतलब आप स्टैट्स को जेनेरिकली देखें तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप यू नो बहुत स्पेसिफिकली देखें तो यू अनर्थ मोर थिंग्स. शरियर, जस्ट टू आस्क यू वन मोर थिंग बिफोर आई मूव ऑन, कि जैसे शायान ने बात की और उमर भाई भी इस मेंशन कर रहे थे कि इंडिया ने बेसिकली एज अ टेस्ट मैच ले के फॉर्मेट को लेकर चेस किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. So is that a template that other teams should look to follow when they are chasing, especially when they're not chasing such a big target and bowling could be tricky? Yeah, it's more of a one-off thing. My personal opinion was that, depending, even if the target is too big, and when I say too big, I don't mean South Africa wala too big, but अगर आप 300 के आसपास भी chase कर रहे हैं, तो it's probably better to play slightly slow in the beginning, keep the wickets in hand, and then accelerate when you can. So you can expect other teams to sort of follow in the games going forward. आपकी टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होता है, तो ऑब्वियसली दैट इज द वे टू द मैच टी. आप 20 क्रिकेट पर आप यू हैव टू गो फॉर व्हाट. ठीक है, आप पाकिस्तान का भी मैच उठा के देखें, 38 for 3 हो गए थे अगेंस्ट नेदरलैंड. देन ठीक है कि अगर आप देखें तो आई थिंक लाइक 90 odd runs in 20 or something like that. तो सॉरी, मैं न्यूजीलैंड वाले वार्म अप की बात हूँ. आई थिंक आई एम मिक्सिंग इट अप. अगर प्लेट वही है कि अगर आपकी शुरू में विकेटें गिर जाती हैं और आपको 50 ओवर पूरे खेलने, देन देयर इज अ पॉइंट वेयर यू हैव टू स्लो. आपको सी ऑफ करने के केस में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रन्स नहीं डिफेंड करने के लिए. तो इंडिया ने चांस लिया कि ठीक है कि हम ये स्लो खेलते हैं, लेट द बॉलर्स सी ऑफ देयर पेसर्स. और जब स्पिनर का जो थोड़ा सा वीक लिंक है, they were able to score on a better pace against Ampa and Maxwell Zampa kind of a bowler, कि जहाँ पे आप अटैक करेंगे ना, तो देन ही इज एबल टू टेक विकेट्स. क्योंकि देन अगर आप उस यू आर गोइंग एप, दैट्स व्हेन ही गेट्स इफेक्टिव. अगर ही ऑफ कर रहे हैं और आप उसको उस तरह से अटैक नहीं कर रहे हैं, तो देन वो उस तरह से हिट्स नहीं लेता है. और यही चीज़ गेम में भी देखी कि जैम्पा को उस तरह से उन्होंने टारगेट नहीं किया. ठीक है कि उसकी जो थोड़ी सी भी ऑफ लेंथ बॉल थी, या जो सी रूम वाली बॉल थी, उन्होंने उस पे स्कोर किए. दे डिडंट रियली टेक टू मच रिस्क अगेंस्ट. क्योंकि ऑन द अदर हैंड वाज गोइंग, ही वाज मोर डॉट बॉल.
he was bowling more economically. तो जहाँ तक बात रही टेम्पलेट की, तो टेम्पलेट ऑब्वियसली अगर आपको शुरू में अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता है, एंड देन वांट टू गिव योरसेल्फ अ चांस टू हैव अ competitive total, then this will be the template के जहाँ पर you have to slow down a little bit, keep wicket in hand, give your batters enough chance के वो they can accelerate after 30-35. जहाँ तक बात आप देखें South Africa, at 40 over mark, they were only like 290 or something. 291 या उन्होंने आखिरी के 10 ओवर जो है ना वो 120-130 रन मारे। तो क्योंकि दैट टाइम बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि भाई के अब ऑब्वियसली 10 ओवर में इसने अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना है। इट्स ऑल अबाउट ने आपको बॉलिंग कैसे है और आपने उस अटैक कैसे करना है। अगर आपके पास विकेट्स इन हैं तो देन यू कैन गो ऑल द गन्स ब्लेज, इतना ज़्यादा उसको रीच आउट कर सकते हैं आप करें। अगर आप उसी तरह देखें, अफगानिस्तान का स्टार्ट मिला बट दे कुड नॉट फिनिश इट। दे वर लाइक आई थिंक 80 for 2, राइट और then they were bowled out for 158. तो ऑल अबाउट के यहाँ में इन लोग की जो एक पाकिस्तानी फैंस में जो एक सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन स्ट्राइक रेट की, वो मसला हमें यही आता है कि हम लोग एट द एंड हम ये तो देख भाई कि क्लासन ने या मार्कम ने इतने दिए 130 141 स्ट्राइक रेट पे खेले, बट दे नॉट भाई कि वो एट व्हाट स्टेज दे पिक्ड अप दिस। ये ऐसा नहीं है कि वो बॉल वन से स्ट्राइकिंग एट 150। तो एंड एवरी टीम हैज देयर ओन वे ऑफ प्लेइंग। आप पाकिस्तान जैसी टीम से कभी भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उस तरह का आपको जो है ना बैटिंग करके देगी। दैट्स नॉट हाउ वी प्ले। सिर्फ दो प्लेयर ऐसे हैं जो ये काम हम कर सकते, इवन देन दे नीड अ फाउंडेशन। फ़खर अगर ये काम कर सकता है तो फ़खर के एक उसको एक सेट नंबर्स चाहिए जहाँ पे he can go get his eye set, then he can go off। इफ्तिखार को भी पीछे से एक प्लेटफॉर्म ये कि भाई के आपके पास एक हेल्दी स्कोर हो, देन ही कैन पुश। और उसके अलावा हमारे पास ऐसे कोई नहीं है जो जाति के साथ ही हो जाए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ना पूरा वर्ल्ड कप लेने वाले, स्पेशली आप कल आज के मैच अगेंस्ट श्रीलंकन स्पिनर्स अगर जरा सी भी एक दो विकेट्स गिरी, we will start playing 90s at some point। राइट। और इवन अगर आप बाबर आजम का भी स्ट्राइक रेट फेजेस में देखें तो ही आल्सो एक्सेलरेट्स व्हेन द टाइम कम्स। और अनलेस कि आपके पास 11 के 11 वही हो जो इंग्लैंड का टेम्पलेट है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट विद व्हाट वी हैव इन द सिचुएशन जिसमें बाबर आजम को अक्सर बैटिंग पे आना पड़ता है, तो उसमें आपको कोई चॉइस होती नहीं एट दैट टाइम। आई नहीं, थिंक इवन एक चीज मैं ऐड कर दूं। श्योर। अगर हम लोग इसी तरह क्रिकेट खेलें, मतलब आप स्लोली एंड स्टडी खेलें और आखिर में आप जाकर एक्सेलरेट करें, तो दैट मेक्स योर बॉलिंग, मतलब सेकेंड इनिंग्स में जब आप बॉलिंग कराते हैं, दैट मेक्स योर फर्स्ट 15 ओवर्स इवन मोर क्रूशल। अगर आपका टोटल पार या बिलो पार है या जस्ट पार, तो दैट मेक्स योर 15 ओवर्स इवन मोर क्रूशल। क्योंकि आज कल का जो ऑस्ट्रेलिया का जो गेम था, वो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन चोक कर दिया था। मतलब जीरो पे 3 आउट थे या 2 पे 3 आउट थे, 2 पे 3 आउट ऐसे ही थे। कुछ स्कोर था। और फिर कोहली भी शायद 12 रन स्कोर पे 12 रन 12 लगे रन। हुए थे, कोहली का कैच उठा था। तो within 5-6 overs Australia had potential almost 4 wickets। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के गेम में भी अफगानिस्तान ने शुरू के पावर प्ले में 2 विकेटें ले ली थी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला गेम में भी was one off, but that puts you that basically tells us कि आपका जो ओपनिंग स्पेल है सेकंड इनिंग में, ये इतना ही क्रूशियल है जितना आपका लास्ट 20 overs in your first innings to basically to carry that momentum in that first inning, in that second inning, in that first phase। You have to be able to cash in on that। क्योंकि हमने जो देखा है अभी तक वो यही देखा है कि 15 ओवर के बाद बैटिंग, it just on TV it looks like कि भाई
बस 15 ओवर के बाद बैटिंग जो पिच लुक्स वेरी इजी टू बैट ऑन। अब आई नो हमने कोहली जैसी क्लास देखी, बट the evidence suggests that 15 over point is something that all teams, not just Pakistan, all teams should really look to cash राइट in on. राइट बिकॉज ज़ाहिर है आपका पावर प्ले का इम्पैक्ट भी आता है सब कुछ एंड द मोमेंटम कैरिंग द मोमेंटम फॉरवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी चाहे बॉलिंग करें बैटिंग करें जो एंड में आपकी परफॉर्मेंस है वो आपको सेकंड इनिंग्स में इट हेल्प्स यू कीप योर चेन्स अप। उमर भाई आपकी तरफ मैं आता हूँ और मैं एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था उस दिन क्रिकेट इन्फो पे। इट वाज बेसिकली डेविड मिलर्स इंटरव्यू और डेविड मिलर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बात की थी उस इंटरव्यू में कि द बॉलर पैनिक्स फर्स्ट। हम लोग हमेशा से सुनते आते हैं कि टेस्ट मैचेस में बहुत लंबी बैटल होती है बॉलर और बैटर, खासकर बॉलर जो है ट्राइज टू प्ले माइंड गेम्स विद द बैटर। और अगर बहुत दूर से एक फास्ट बॉलर भागता हुआ आ रहा है 150 की बॉल स्पीड पे बॉल करता है एंड द बैटर जस्ट लीव्स द बॉल एंड लुक्स एट द बॉलर, सो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, साइकोलॉजिकल गेम्स चल रही होती हैं। लेकिन although T20 or one day में format छोटा है, but the battle remains the same. And when David Miller was talking about how he thinks that the bowler panics first, that actually made lot of sense because हमने 2020 वर्ल्ड कप का मैं रेफरेंस दूंगा जब पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा ऑस्ट्रेलिया से। तो मैथ्यू वेड के एक दो शॉट्स ने शाहिन अफरीदी का सारा प्लान राइट लेफ्ट कर दिया था एंड वी हैव सीन मेनी अदर एग्जांपल्स लाइक दैट एज वेल। तो कल का जो मैच आई मीन आज का मैं कहूँगा चंद घंटों में शुरू होने वाला मैच पाकिस्तान का, तो जैसे हम फ़खर की बात कर रहे थे, अब्दुल्ला शफी की बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको कि किस ऑप्शन के साथ पाकिस्तान अगर जाए तो पाकिस्तान उनकी बॉलिंग को पहले पैनिक में डाल सकता है, पहले प्रेशर डाल सकता है, या फिर पाकिस्तान को खेलते हुए ऐसा क्या करना है, चाहे वो मोमेंटम तेज करें, चाहे वो सिंगल डबल करें, स्ट्राइक रोटेट करते रहें, बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक पाकिस्तानी बैटर्स नीड टू मेक श्योर दैट श्रीलंकन बॉलिंग gets under pressure pretty much right away and then keep them down there as well? एक चीज़ जो पाकिस्तानी प्लेयर्स करते हैं, स्पेशली बैट्समैन या बैटर्स, हम लोग प्लेयर्स को खेलते हैं, हम लोग बॉल्स को नहीं खेलते। राशिद खान आपके सामने आ गया, मुजीब आपके सामने आ गया, वही मुजीब वही राशिद जिसको इंडिया ऑस्ट्रेलियंस जो है फैंटी मारते हैं, इवन बांग्लादेशी प्लेयर्स फैंटी मारते हैं, हम लोग जो है प्लेयर्स को खेलने लग जाते हैं, हम लोग बॉल को नहीं खेलते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, स्पेशली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट टूर्नामेंट्स। तो जहाँ तक मेरी जो है नाक़िस राय है वो यही है कि फोकस ऑन द डिलीवरीज। आपके पास 300 डिलीवरीज है। आई थिंक सदीरा जो उनका बैट्समैन है, उसका एक इंटरव्यू आया था, तो उसने बोला था कि मेरी कोशिश होती है कि मेरी डॉट बॉल्स कम से कम हो। आपकी सिंपल फिलॉसफी ये होनी चाहिए कि आपकी डॉट बॉल्स जो है वो कम से कम हो। हाँ, वन ऑफ सिचुएशन आप फंस गए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली सिचुएशन कि जिसमें इंडिया के 3 आउट हो गए हैं, आप 200 रन चेस कर रहे हैं, वो पिच भी इस तरह की थी कि जिस पर 225 230 रन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मगर ओवरऑल आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द पिचेस वुड बी, वो अच्छी पिचेस होंगी। तो उस पर यू मेक श्योर कि आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं आप सॉफ्ट हैंड के साथ बॉल ड्रॉप कर रहे हैं और आप भाग रहे हैं, क्योंकि आप सिंगल डबल लेंगे तो आपकी बाउंड्री तो लगेगी। और डेविड मिलर, आई मीन ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बॉलर पैनिक करता है, स्पेशली जब आपका पहली बॉल पे आपको बाउंड्री पड़ जाती है इन दिस डे एंड एज, कि जिसमें आपको पता है कि स्पेशली आखिरी के जो 10 ओवर हैं, या अब जो ज़्यादातर टीम्स की टेम्पलेट है वो यही है कि मैंने बॉल को बाउंड्री तक कैसे पहुंचाना है। तो हमारा जो सिंपल प्लान, do not play the personalities, play the deliveries that are coming to you, stick to your plan. Yes, try to see कि आप अगला बंदा, अगर आपने इस बॉल पर फुल बॉल पे आपने सामने मिड ऑन के ऊपर से चौका मार दिया है, तो एंटिसिपेट कि अगली बॉल बॉलर कहाँ फेंकेगा। इट हैपन, आई थिंक यस्टरडे, कल की गेम में हुआ था। आई थिंक राहुल ने ही प्लेड शॉट, आई डोंट नो कौन था बॉलर, उसने लेंथ बॉल कराई हेजलवुड, और हार्दिक पांड्या या ही केम इन कोहली के आउट होने पे। पहली 2-3 बॉलें हेजलवुड ने लेंथ पे कराई, उसने जाने दी या छोड़ टुक्की। थर्ड और फोर्थ डिलीवरी ही एडवांस्ड लेंथ बॉल, ही चिप्ड ओवर फॉर 4, और उसके बाद ही न्यू
that the next ball is going to be a short ball. And he was ready for that short ball. तो आपका जो बॉल टू बॉल एनालिसिस है, यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, आप जो है ना बस ये नहीं देखें कि भाई और हम मुसलमान हैं तो जी बस हम तो यही होगा। नो, you have to think about the game. So coming back to plan, play the deliveries, have a plan. What is your plan? Plus अगर आपका प्लान हेवायर होता है तो आपके पास कोई बैकअप है कि नहीं है। तो अगर बैकअप है तो मेक श्योर आपका जो रोल है यू फॉलो दैट रोल। Hopefully there are these things tactically, which personally I doubt. We're not a very sound team, we're not a very sound nation, to be honest. But cricket की बात ही रखें, we are not tactically sound team led by a tactically sound captain right now. तो होपफुली स्टिकिंग टू गेम प्लान, और होपफुली कल जो हमारा 7-0 का रिकॉर्ड है वो 8-0 हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और 6-0 जो है वो 6-1 हो जाएगा होपफुली। Inshallah, and that's something that we're all looking forward to. So I'm gonna come back to the topic of what are our expectations with this game, especially Pakistan's performance. In the game that starts in a few hours. लेकिन मैं एक और टॉपिक को छेड़ना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि sort of काफ़ी hyped up टॉपिक चल रहा है आजकल, खासकर आज में. And I want to bring this up because, and I think we all agree on this, I think it's important to talk about this, and that is Zainab Abbas' exit from India. Now, I would also make it clear यहाँ पर कि अभी तक हमें नहीं पता, हमारे पास सारे facts नहीं हैं, but it's very unusual what happened. और जो reports हमारे सामने आ रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, somebody tweeted from her name so many years ago, and it's all coming up now. So Shayan, let me start with you on this one. But my fundamental question is actually two questions. पहला question तो ये है कि अगर ये वाकई इतना बड़ा issue है जो कि जितना बना लिया गया है, और अगर वाकई ये उनके अकाउंट से ट्वीट्स हुई थी, तो ये चीज़ें टिपिकली आप वीज़ा इशू करते हुए, बैकग्राउंड चेक्स करते हुए देख लेते हैं, स्पेशली व्हेन समबडी इज लाइक ज़ैनब अब्बास, जिसने इट्स दिस इज नॉट हर फर्स्ट रोडियो बेसिकली, शी हैज़ कवर्ड सो मेनी इंटरनेशनल इवेंट्स बिफोर एज वेल. व्हाई नाउ, व्हाई दिस? आई मीन देयर कुड बी सो मेनी ओपिनियंस एंड विल टच अपॉन दैट, बट आपके क्या तासुरात है इस पे? लाइक हाउ डू यू सी दिस? Why do you think this was necessary at this point? And what does it actually do to the World Cup, a mega cricket event at the world stage where everybody's watching? I mean, देखें, टाइमिंग, इसकी जो टाइमिंग है तो बहुत अजीब टाइमिंग है। एक 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 पॉइंट आप ये देखें कि कोई भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अभी तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट and पाकिस्तानी फैंस, none of them have been granted Indian visa. तो एक तो ये पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आप इतना लंबा डिले कर रहे हैं। I'm sure the delay is politically motivated, but in that motivation, what is your due diligence? अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि भाई इस बंदे के पास एंटी इंडिया मोटिव्स हैं, या इस बंदे के पास एंटी हिंदू sentiments हैं, whatever your criteria is to grant somebody a visa to enter India. If Zainab Abbas is traveling to India, why was this not pointed out before? To hand her an embarrassment really in a global stage, कि यार ये बंदी तो मतलब एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है। आई वुड बी सरप्राइज कि इसको आगे जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, क्योंकि ऑल मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स अभी अगला T20 का वर्ल्ड कप होगा, ये सब होगा, आई डाउट कि शी बी पार्ट ऑफ दैट। तो माय सेंटिमेंट्स आर कि यार आई अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स हर्ट पीपल, but in this day and age, oh, anything can trigger anybody in this day and age. अगर हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कि ये जो भी लोग सुनेंगे इनमें से कुछ सेलेक्टेड लोग होंगे जिनको ये बात ट्रिगर करेगी, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को आप हर्ट कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो। And I think at a point like this, in a stage like a World Cup, I understand India is the host, but they're not the organizers. They're not this is not an Indian Cup. This is not an IPL. This is not a domestic Indian tournament.
in which this policy would be considered applicable. Even then, I would question it, but at that point, I would understand कि यार ये इंडिया का अपना private event है. But this is an ICC event conducted by ICC in India, which means that ICC should be the one calling the shots, not BCCI. But हम बहुत से लोग कहते हैं कि यार ICC is BCCI या BCCI is ICC. But I think if you're hosting the World Cup, you should look at things a bit more diplomatically. I think diplomatically is the right word to use. क्योंकि in Pakistan, जब हम लोग कहते हैं कि यार इंडिया ये जगह अपनी खेलने आया तो हम क्यों उधर जाएं, तो हम लोग की तरफ से बड़ा बोला गया था कि यार we should be diplomatic and we should not jeopardize the whole event just for our nationalistic purposes. That's what they're doing. India is doing that. India is serving their cricket based on their nationalistic agenda, and more power to them, because that's their nationalistic agenda. You cannot dictate that. But at the same time, हम लोगों को as Pakistanis, I don't think from this point on, I don't think ये करना चाहिए कि यार आप. I think Pakistanis need to realize what kind of power they hold in the cricketing fraternity. Pakistan doesn't realize that, or the people who do realize that, they don't have the guts to take that call. कि आप थोड़ी अपनी पावर दिखाएं, थोड़ी अपनी स्टैचर्स दिखाएं कि यार हम भी कुछ हैं. And I understand कि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है डिक्टेट करने के लिए, but we hold a certain amount of power in terms of a domino effect. Okay, yes, we don't have the money, but our decision can impact a lot of things monetarily, and that's where ultimately things lie. Yeah, and like you said कि I guess the people that have the guts they don't really have the power. लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि देखिए सेंटिमेंट्स जो हैं किसी के हर्ट नहीं होने चाहिए. आई थिंक दैट्स बॉटम लाइन. चाहे वो किसी के नेशनल सेंटिमेंट्स हों, चाहे वो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स, दैट्स बियॉन्ड द क्वेश्चन, दैट्स बियॉन्ड द आस्क हियर, राइट. जिसने मतलब कोई भी ऐसी बात करे उसको कंडेम करना चाहिए, दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन. आई थिंक यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सॉर्ट ऑफ चीज़ मुझे टीज की थी वो ये किया था कि इवन द मोर प्रोमिनेंट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, एंड इवन लाइक पाकिस्तान से किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, बट नो बडी इज बॉदरिंग टू चेक कि यार वो जैनब अब्बास थी भी या नहीं. मतलब इन दिस डे एंड एज आई मीन आजकल तो एआई भी आ गया है. 2014 में तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था, बट यू कैन बेसिकली put together anything from anybody's name and even picture and video these days, and that could cause a lot of trouble. But I think the due diligence has to be कि यार आप एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि जिस बंदे या बंदी के बारे में बात हो रही है क्या ये वही है या नहीं है. तो शरियार आई थिंक हम मेरी आपकी आज ग्रुप में बात भी हो रही थी और हमारा यही एक सॉर्ट ऑफ था कि यार वाई इज नोबडी बॉदरिंग टू चेक ऑल ऑफ दैट. एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया था कि know somebody needed an excuse and they got it and they're using it. So what's the end to it? मतलब क्या, like Shayan said कि it's gonna be surprising to see Zainab getting more contracts with the ICC going forward, because we know where the power is. So is that the end of Zainab Abbas, or do you think there's gonna be some sort of resolution to it in the coming few weeks? I don't think कि ज़ैनब ने 2019 भी तो किया था ना. तो it's not I mean India have a different policy when it comes to Pakistan, और ये चीज़ें आप जिस तरह का अभी लीगल सिनेरियो बना हुआ है और जिस किसान को ट्रीटमेंट मिल रही है यू कैन एक्सपेक्ट दैट. और मैं तो सीधी बात है, आई डोंट ब्लेम इंडिया फॉर ट्रीटिंग अस दिस, क्योंकि वी अलाउड देम टू ट्रीट अस वे. हमारे यहाँ लोग जो है वो रियलाइज नहीं, हमारे यहाँ जो है ना वो चीज़ को एक अगर कोई बंदा किसी चीज़ पे कोई स्टैंड या कोई एक चीज़ आइडिया फ्लोट करके भाई कि हमें अपनी रिस्पेक्ट इस तरह से बनानी चाहिए, तो उसको सपोर्ट मिलती है, उसको क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है. ठीक है, अब आप मुझे बताएं ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं कि भाई हमें इंडिया के बढ़कर चाहिए और जी हमें ट्रॉफी जीतनी चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, किधर हैं वो? आप जर्नलिस्टों को जो है वो वीज़े नहीं के शायकीन को वीज़े नहीं मिल रहे, जिसको वीज़ा उसको बाहर निकाल दिया. सही.
आपके टीम को वो से है क्लोज डोर में वार्म अप मैच खिला रहे हैं जस्ट बिकॉज सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, यू नो। अगर वो इस तरह की एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और उसके भी हमारे वाले कहते हैं नहीं जी कोई ये तो क्रिकेट स्पोर्ट्स है और ये है वो है और पॉलिटिक्स रखना चाहिए और करना चाहिए, बस लोलती करते रहें लोगों की आपको इसी तरह ट्रिलता रहेगा। आप जब तक रियलाइज नहीं भाई के देखें, हमें ये मिसकंसेप्शन दूर होनी चाहिए कि भाई कि इंडिया ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इंडिया के पास पैसा है, ये वो भाई पूरा आईसीसी का वर्ल्ड कप उठा के आप एक तरफ रखें और पाकिस्तान का मैच उठा के एक तरफ रखें, आप उस पैसे वो से में आप कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो 20% है 1% है, आई डोंट केयर, आपकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। वो कोई रन नहीं कर रहे हैं कि जी कि वो सोली जो है ना वो आईपीएल के पैसों से ना वर्ल्ड क्रिकेट चला रहे हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन है। आप ये चीज़ रियलाइज नहीं करेंगे तक आप उसको कैश इन नहीं करेंगे, आप इसी तरह जरिए रहेंगे और आगे से हम जो है ना बोलेंगे नहीं जी आप हमारे यहाँ आए जिन्ना गांधी ट्रॉफी खेलें, कोई मसला नहीं है, हम जो है वो हाथ में हाथ डाल के खड़े होंगे और बोलेंगे नहीं जी पर इंडिया भाई भाई। आप इसी तरह जलील होते रहेंगे जब तक आपकी लीडरशिप वो चापलूसी मिलेगी, उनको रियल इश्यूज के बारे में कोई ना आइडिया है। अब आप मुझे बताएं ना पीसीबी के चेयरमैन किधर हैं? आपके आपके वीजा आपके लोगों को वीजा नहीं मिल रहा वहाँ जाके मिलने का या रिप्रेजेंट करने का, आपकी टीम को जो है वो जो है वो नहीं मिल रही हैं चीज़ें, वो अपना कोई चिल पिल लेके बैठे, कोई परवाह नहीं है, बस बैठे बैठे जका अशरफ कह रहे हैं कि ही इज कंसर्न्ड, हाँ भाई उनका वो ये कंसर्न्ड स्टेटमेंट है, आप वो कंसर्न अपने वो अपने टेन्योर के लिए कंसर्न्ड है। हाँ वो एक मैं यार बंदे की कंसर्न्ड ट्वीट रहेगा। पढ़ रहा था, वो एक मैं बंदे की ट्वीट पढ़ रहा था कि पॉसिबिलिटी ऑफ आर टीम इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। भाई कौन सी पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है वो आपको जो है ना आपके लिए जो है ना वो अजीब हरकतें वहाँ कर रहे हैं और आखिरी नहीं है, आप अपने चक्करों में लगे हैं जी मेरी कुर्सी पक्की रहे, बागी जाए बाकी चीज़ें कहीं भाड़ में, ठीक है। अब आप वो जो किसान टीम को अलाउ करने से पहले वो जो 18 रुकनी 13 रुकनी 15 रुकनी जो कमी जिसने अलाउ किया था पाकिस्तान को, किधर वो कहाँ कहाँ है स्टेट भाई की क्या ट्रीटमेंट हुई है। तो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि भाई कि जब एज अ नेशन जो है ना आप अपनी चीज़ों को उसको इस तरह की चीज़ों को आप मैटर ऑफ प्राइड नहीं बनाएंगे ना, आज है ना बाज वो इस तरह की है, कल वो किसी और करेंगे, ठीक है। वो आपकी टीम को घर पे कुछ नहीं कर सकते, यू नो। तो वो तो अगर आपको याद हो न्यूजीलैंड में कोविड के टाइम पे आई थिंक एक हमारा या प्लेयर पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान टीम का एक्चुअली मिसट्रीट किया गया। मिसट्रीट किया गया था क्योंकि कोई शायद कमरे से बाहर निकल गया था, बहुत ही कोई माइनर सा वायलेशन था। इट वाजंट कि भाई बंदा बाहर निकल गया कम्युनिटी में चला गया, इट वाजंट लाइक दैट। इट वाज लाइक आई थिंक शादाब खान था या हसन अली था जो होटल की रूम से निकल के होटल लॉबी में चला गया था और फिर वापस आ गया था। और उस पे इतना हुआ था कि मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से पीसीबी को वार्निंग गई थी कि भाई अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। और उस वक्त कौन आई थिंक वसीम खान था या एहसान मानी था, नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन था चेयरमैन, बट उनकी तरफ से ये आया था कि हाँ वी आर मॉनिटरिंग और मतलब ना बहुत ही ओंगा बोंगा सा कुछ आया था। मतलब आई मीन अभी लीडरशिप तो हमारी अभी ढीली हुई है ना, मतलब ढीली हम लोग कह रहे हैं अभी ढीली हुई है, बट हिस्टोरिकली देखा जाए तो हमारी लीडरशिप ऐसी ही बोंगियां मारती रहती है कि यार मतलब आप इंग्लैंड चले गए इतने इतने उसमें आपसे वापस आने के बाद इंग्लैंड ने आपका टूर कैंसिल कर दिया है, न्यूजीलैंड ने आपका टूर कैंसिल कर दिया है, एंड रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे मेड इट अप लेटर ऑन, बट वो जो 2 ढाई महीना था उसमें तो आपकी इज्जत कोई नहीं रही ना।
They treated you like third class. we basically have a history. We basically have a history of it, and we allowed people to do that to us. So उमर भाई, the question that comes to my mind is कि I think हमने पहले भी जब बात कर रहे थे, हमने system के बारे में बात बहुत की, and I know it's deviating from cricket a little bit, but just to put a closure to all of this discussion कि बहुत दफ़ा हमने बात की कि एज अ नेशन ही एक सिस्टम को हम लोग फॉलो नहीं करते, उसको बिलीव नहीं करते. And what we're seeing now could be argued is basically the effects of what things or decisions that have been made not only in cricket but elsewhere as well, in other things as well. uh, Shreya ne baat ki कि we do have basically not just a stake, but we have a very significant contribution as well in the World Cup and other ICC events, because everybody knows it's not a secret. Let's face it. When India and Pakistan play, regardless कि पाकिस्तान की टीम कितना अच्छा कितना बुरा खेल रही है, the world stops to watch that game. And we cannot imagine, or we cannot even fathom how much revenue that generates, probably setting the entire World Cup aside and that one game aside. लेकिन वही बात आती है ना कि ले तो कौन ले, मतलब बात करे तो कौन करे, because it all comes back to how we are as a nation. जैसे कल एक शो पे वसीम अकरम से किसी ने पूछा कि वसीम भाई जो है वो इतना कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, तो वसीम अकरम जस्ट लेफ्ट, उसने कहा यार ये वही लोग हैं जो हम लोग हैं, ये उसी सिस्टम से आए हैं. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम दैट वी डू नॉट डू बेसिकली एट अ मोर जेनेरिक लेवल. तो क्या आपके तासुरात हैं इस बारे में कि ज़ैनब अब्बास इज जस्ट वन एग्जांपल, कल को ये चीज़ किसी पाकिस्तान के प्लेयर के साथ भी, इट कुड बी एनीथिंग एनीबॉडी, तो क्या तासुरात हैं आपके इस बारे में? पहले तो whatever, अगर तो she really said something like that, ठीक है, जितना मैंने फॉलो किया है, if that was her account and she says something like that, she would have come forward and apologized. जितना मैं डायरेक्टली फॉलो करके और थोड़ा इनडायरेक्टली कुछ लोगों के तवस्सुत से सेकंड थर्ड डिग्री नेटवर्क से मैं जानता हूँ, तो she would have done that. दूसरी बात, Waqar Yunus, Wasim Akram, Ramiz Raja, no one said anything. No one mentioned anything. No one wore an armband. I mean, kahan ke Pakistani ho yaar? Come on. ठीक है, you're journalists getting deported. I mean, you're not going to do anything. Coming right to the point, almost, if someone has the guts, ठीक है, if Babar Azam has the guts, I don't think he does, to be honest. If he would have the guts, beat the game against India. Send the message. Send the message. What's going to happen? 2 पॉइंट आप लूज कर दोगे, ठीक है यार, आज तक वर्ल्ड कप में हम इंडिया से वैसे ही हारते आए हैं, एक और वर्ल्ड कप सही, यू फोरफीट द गेम, फिर आप देखो कितने बिलियंस का नुकसान होगा बीसीसीआई को, ठीक है ना. मैच तो आप हार गए, ठीक है, वो पॉइंट्स तो आप मेकअप कर सकते हो, नहीं भी करते हो, who cares? What you're doing is you're standing up for that one person just because she belongs to your country. It's about taking a stand. पता नहीं कहाँ मैंने ये पढ़ा था कि you don't start a fight thinking that you're going to win. You start a fight because you know that it is your duty to fight. ठीक है. So बहरहाल बाबर आजम वो तिल नहीं है जिनमें तेल है. So let's not go there. मगर अगर मेरे बस में होता, I would call the game off on the eve of the game. Right on the eve of the game. Or maybe before the toss. I would call the game off. And then do whatever you want to do. You want to slap a fine? Be my guest. Please do that. ठीक है, 2 पॉइंट जाएंगे, फैंटास्टिक. बट व्हाट विल हैपन इज पूरी दुनिया में द शेम एंड द स्लैप, ठीक है ना, वो एक होता है ना, वो चांटा जिसकी आवाज नहीं आती, उसकी आवाज बड़ी जोर से आती है. सो एनीवेज, दैट्स माय पर्सनल expression and feeling about this whole situation, which अगर ज्यादा नहीं करना तो यार आप मैच आर्म बैंड बांध के खेल लो, ठीक है, मगर I'll bet my lifetime supply of chai, we don't have the guts. We're not that ballsy, ठीक है, that we're going to do that, to be very honest. So anyways, जहाँ तक सिस्टम की बात है, इमरान खान ने
बोला था जब हम PSL में वेस्ट इंडियंस और जिम्बाब्वेंस श्रीलंकन्स को बुला रहे थे कि यार क्या रेलू कट्टे जमा कर लिए हैं। बहरहाल कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, बट वी कैनॉट बी सिस्टमैटिक। जब यू थ्राइव ऑन बीइंग कॉरियल, जब आपको अच्छा लगता है कि आप पे टैग लग गया अनप्रडिक्टेबिलिटी का, तो आप कहाँ से सिस्टम करोगे यार। आपके जो आज एक और मैं खबर पढ़ा था, एक हमारे जो कायम मकाम वजीर तालीम है वो मरहूम है, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फौत हो चुके हैं कुछ साल पहले। आई मीन कम ऑन, कहाँ का सिस्टम, कहाँ का सिस्टम। ठीक है, ये भी जो हमारी टीम है, आई मीन these kids, these men, they play because they want to play। ठीक है, इमेजिन इफ वी हैड द सिस्टम्स, हम तो पता नहीं कहाँ होते, हमारे सामने तो कोई टिक ही ना सकता। ठीक है, 555 गेम में जहांगीर खान जीता है यार, दैट इज अ ब्लडी, आई मीन मैग्निफिसेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी स्पोर्ट में कोई और जो लॉन्जेविटी है सक्सेस की करीब नहीं फटकती। I mean, that was one individual. So, anyways, coming back to the point, system, Wasim Akram is correct. ये सारे लोग इसी सिस्टम से आए हैं। जब तक हम ग्रास रूट से सब कुछ सही नहीं करेंगे, nothing's going to happen, and that's not going to happen unless and until people making those decisions will do something about it. And they're not going to do it unless we bring the people who don't have vested interests. They only have one interest, and the interest of the flag. That's it. So, yeah, my 2 cents. नो एब्सोल्युटली एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छा बड़ा एक यूनिक पॉइंट रेज किया कि अगर बाबर आजम गेम फॉरफीट करते हैं तो इफ़ नथिंग एल्स दैट जस्ट सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। और जितना पाकिस्तानी अवाम को हम जानते हैं, मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम उसके इस डिसीजन के पीछे खड़े ज़रूर होंगे, क्योंकि ये वो उनमें से, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जर्नलिस्ट वगैरह जो लोग मीडिया पे नज़र आते हैं, मेरा नहीं मानना कि वो पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारे ट्रोल्स भी हमें सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं एंड दे आर जस्ट सर्विंग देयर ओन एजेंडा। लेकिन ये एक चीज़ है, जब बात इंडिया की आती है तो हमारे बहुत से लोग यूनाइट हो जाते हैं। सो अगेन मे बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, बट वी कैन जस्ट ओनली होप फॉर द बेस्ट। But again, coming back to the cricket, I think game happening in a few hours. तो शायान, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक पे कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान कितना टोटल बना सकता है श्रीलंका के अगेंस्ट? आई थिंक पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा है, आई थिंक पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। उनकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, और I would have them, if I'm the captain, if I'm in the field, मेरा ये होगा कि मैं जाके पहली बॉलिंग लूँ, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। इफ द कंडीशंस आर what we're expecting them to be, then I would expect कि यार आप जाके बॉलिंग करें। क्योंकि मैं प्रीव्यू पढ़ रहा था क्रिकेट इन्फो पे, तो it says कि it will be a cloudy day, with no rain, but it will be a cloudy day. Uh, that that is a little bit favorable for bowling during the day as well. तो अगर थोड़ी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आपकी बॉलिंग को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है, आई वुड टेक दैट चांस एंड try to take full use of that. और फिर अगर आप श्रीलंका को जल्दी, आई मीन if you get a target around 250, 260, even 270, I think that's a comfortable target for Pakistan to chase, and a comfortable target, I think, मैं मतलब फ़खर ज़मान की मैं बात कर रहा हूँ। कभी-कभार ऐसा होता है कि अगर आपका प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं, तो वो जाके थोड़ा ऐसा लगता है कि वो और क्लूलेस होता है। ही डज़न्ट रियली नो हाउ टू प्ले हिज़ गेम। लेकिन अगर आपको थोड़ा मीडियम साइज़ टारगेट मिलता है, तो इट अलाउज़ द प्लेयर टू स्ट्रक्चर हिज़ इनिंग्स कि यार ये ऐसा टोटल है कि मैं अगर आराम से भी खेलूँ तो मैं बाद में रिकवर कर जाऊँगा, क्योंकि आई हैव दैट पोटेंशियल टू रिकवर। लेकिन अगर आपको पड़े ही 350 400 रन पड़ते हैं, तो जो आपका आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन होता है वो और प्रेशर में आ जाता है। तो आई थिंक द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड, इन माय ओपिनियन, इज टू गो इन, इफ यू विन द टॉस, यू bowl फर्स्ट, यू गेट ए रीजनेबल टोटल कि आप
that gives your batting the confidence that we can definitely chase this out and close the game. Sounds good. So basically, try to ball first, try to restrict them below 280 because that's sort of a target that you think is comfortable for Pakistan. Shahryar, coming to you with the same question, क्या लगता है आपको पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अगर वो टॉस जीते और क्या प्रेडिक्शन क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी उनसे? यार मैं प्रोडिक्शन तो अभी बताता हूँ, मगर मुझे आपसे सवाल पूछना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ज़रूर वो ज़रूर। ये कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ इसमें या इस मैच में क्या है, और जब अगर आप और वो चीज़ की स्ट्रेंथ अगर जैसे अभी आगे पाकिस्तान टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ है, तो जब आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ होती है, पहले बैटिंग करते हैं या पहले बॉलिंग करते हैं? आई मीन डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या हैं। तो अगर पहले अगर आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा है कि वो ठीक ठाक रन दे सकते हैं तो आप पहले बैटिंग करें, वरना आप बॉलिंग करें, ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द अपोजिशन। बिकॉज आपने अगर जब से बाबर आजम कैप्टन बने, फॉर एग्जांपल जब से बाबर आजम खेलना स्टार्ट किया, वुड से एक जो स्टेबिलिटी फैक्टर बाबर लेकर आते हैं उसमें चेजिंग सूट्स पाकिस्तान स्टाइल ऑफ बैटिंग। बिकॉज अगर आपको एक टारगेट पता हो तो उसके हिसाब से आप इनिंग्स पेस कर सकते हैं। लेकिन बॉलिंग पे फिर डिपेंड ज़्यादा करता है कि आपने उस ऑपोजिशन को एक डिसेंट टारगेट के अंदर रिस्ट्रिक्ट भी करें। सो दैट वुड बी माय ओपिनियन टू बॉल फर्स्ट। जैसा कि कहा कि क्लाउडी कंडीशंस हैं, और जो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के गेम पे भी कि बॉलिंग पहले करने में थोड़ी सी हेल्प मिली थी बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स एज वेल। सो दैट वुड बी माय आंसर टू योर क्वेश्चन। बट आई एम क्यूरियस टू नो कि आप क्या सोच रहे हैं, बिकॉज जैसे आपने सवाल पूछा ना, मुझे लग रहा है कुछ चीज़ आई है आपके दिमाग में बड़ी सुथरी किस्म की। नहीं, उमैर भाई पहले आप बताएं। अभी कीप इट सिंपल। अगर आप टॉस जीतते हैं, पहले बॉलिंग करें और उनको कोशिश करें आप रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि आप कितने ओवरों में उसको पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर की अगर 1-2 विकेटें गिरती हैं तो ठीक है, आप अपना प्लान चेंज कर लें, 40 की बजाय आप 45 या 48 या ठीक है आप 50 में कर लें। 2 पॉइंट्स आर बेटर देन 0 पॉइंट्स। तो आई वुड से कीप इट सिंपल। स्क्वाड अपना कीप द सेम स्क्वाड, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू वन द लास्ट गेम। जस्ट बिकॉज फ़खर इज़ आउट ऑफ फॉर्म, कोई ज़रूरत नहीं है उसको ड्रॉप करने की। ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, ही इज़ गोना कम टू द पार्टी, इंशाल्लाह ही इज़ गोना कम। सो टॉस जीतते हैं, पहले बॉलिंग करें, उसके बाद चेस करें इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का ऑलरेडी एक अच्छा हेल्दी रन रेट है, तो इट्स Mhm. नॉट लाइक कि पाकिस्तान विल बी प्लेइंग टू better than run rate in this game. I mean, hopefully they will, but that won't be the focus. Yeah. Yeah. So Shahryar, back to you. Same question. जो जैसे अब जो रिसेंटली गेम्स हुए हैं पाकिस्तान के, अपार्ट फ्रॉम नीदरलैंड गेम, आप उसको साइड में रखें, तो पाकिस्तान ने पहला वार्म अप गेम पहले बैटिंग की थी और काफी गंदा रहा था। दूसरे मैच में चेस किया था, एंड आई मीन दे कुड हैव वन दैट गेम। वो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे हार, बट द पॉइंट इज के they were on course of chasing it. तो द पॉइंट इज कि जो जिस तरह से, क्योंकि हम लोग जो श्रीलंका के गए, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो स्पिन बॉलिंग है, क्योंकि हम स्पिन के सर हैं। हमारे एज अ बैटिंग यूनिट हम हंस रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहले बैटिंग करने में थोड़ा सा इशू ये है कि हम ज़्यादा स्पिनर्स को हावी होने दे रहे हैं, एंड देन दैट डजंट अलाउ टू स्कोर एट अ सर्टेन रेट। हम फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जस्ट टू गिव इनफ टारगेट टू आवर बॉलर्स। एंड यही मसला हमें में हुआ था। वी डिड नॉट, इवन दो हम 42 ओवर्स में 250 रन का टारगेट दिया था, बट स्टिल दैट वाज दे वर एबल टू चेज इट। तो ऑब्वियसली जिस तरह से बाबर जिस तरह से आजकल कैप्टनसी कर रहा है, या जिसका कंफर्ट जोन है, he would want to restrict position at a certain total, or they would go for chasing it. The point is कि आप जो बात हम पहले प्लेइंग 11 की, it will all comes down to के अगर आप प्लेइंग 11 में चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अब्दुल्ला को ये गेम देना चाहते हैं, तो देन
would you go for chasing, knowing कि एक बंदा you know रहेगा आपके सेट ओपनर्स को सेट ओपन and he will need some time to to score runs. तो इन दैट सिनेरियो आप जो वो पहले बैटिंग करके अपने बैट्स को ज़्यादा चांस देंगे टू पोस्ट अ टोटल, या आप उसको अंडर प्रेशर रखेंगे गो फॉर चेजिंग, क्योंकि आप बॉलिंग में तो चेंज नहीं। अब it is remains to be seen how they go about, but I think the best case scenario would be to go for chase, and आपने पहले मैच में पहले बैटिंग की है और डिफेंड किया है, then hopefully they will be able to the bowlers will be on confidence, तो वो पैंस में they can get that। तो और फिर श्रीलंका की भी, क्योंकि they were not able to finish their game on a high last game, वो पहले उन्होंने बॉलिंग कराई थी, they went for the runs, तो उनको थोड़ा सा इस बात पर होगा कि यार अब हम बैटिंग करें तो to give our bowlers in total to defend it, तो it will be a good game to see। Absolutely. I think unanimously हम लोग शायद इसी बात पे agree कर रहे हैं कि पाकिस्तान, should probably go for the chase. And let's see what happens. Let's see what team they announce, what changes they make. But, whatever the case might be, we'll hope for the best and we'll hope कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, अच्छा perform करे और अच्छा result लेकर आए, which should be the win. And hopefully this will help Pakistan gain confidence, specifically when it comes to playing against the spin attack, a good spin attack in these conditions. तो आई थिंक इसके साथ हम आज के एपिसोड कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टू ऑल ऑफ यू, for attending this session and giving us your awesome thoughts, and to all of our viewers and listeners, इंशाल्लाह आप भी दुआ करते रहिए कि पाकिस्तान अच्छा खेले इस मैच में, अच्छा रिजल्ट लेकर आए, और इंशाल्लाह आपके सामने हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ दिनों में with another set of analysis. But until then, that's all we have from tonight, and inshallah we'll see you guys soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz.